separation of a compound of a mixture. Okay, now how we can able to separate out a component of a mixture? We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Okay, chemically it is not a pure. Okay, many of the substances are not a pure in nature. Different method of a separating are used to get a individual component from a mixture. Okay, there is a lot of a technique through which we can able to transmit out or separate out elements or a atom from the mixture. Separation make it possible to study and use the individual component of a mixture. Okay, from the mixture. Now first of all, what is a mixture? We know it when a two or more component mix with each other and form a substance, that is known as a mixture. Okay, now heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Okay, heterogeneous mixture can easily separate out with the physical quantities or physical methods. Okay, through physical method we can able to separate out heterogeneous mixtures component मीन्स के कंपोनेंट जो होंगे heterogeneous मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे उसको हम आराम से फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर पाएंगे. ओके, कौन कौन सी मेथड है फिजिकल मेथड? तो क्या हैंड पिकिंग जो है, वो सीविंग जो है, फिल्ट्रेशन जो है, उससे हम आराम से क्या करेंगे, हिट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे उसको हम सेपरेट आउट कर सकेंगे. ओके, और यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे कि मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट कैसे कर पाएंगे. ओके, उसकी सभी टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, टुडे वी विल डिस्कस और स्टडी about the different techniques, okay, through which we can able to separate out a component which are present in a mixture. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of a mixture. Okay, there is a lot of technique, many techniques through which we can separate out a component which are present in a mixture. Now, how can we obtain a colored component, dye, from the blue black ink? Okay, now here you can see in a watch glass we have taken ink, and in a beaker there is a water, and a Bunsen burner is there through which we are giving a heat to the beaker, and in the surface of a beaker we have put a watch glass in which ink is there. We find that ink is a mixture of a dye in water. Okay, we have taken ink in a watch glass and we are heating with a water bath. ओके, हियर जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम वाटर बाथ कहेंगे. क्यों वाटर बाथ कहा? क्योंकि हम हीट कर रहे हैं पर ऊपर वाटर रखा है. ओके, वाटर रखा है बिकॉज ऑफ दैट वाटर वेपर विल टचेस टू द वॉच ग्लास. वाटर वेपर जो होगा मीन्स का वाटर जो होगा वो क्या है, लिक्विड में से गैसेस में कन्वर्ट होगा व्हेन वी आर गिविंग अ टेम्परेचर, और उसके कारण ऊपर इंक के अंदर थोड़ी हीट जनरेट होगी, मीन्स की हीट आएगी, और उसके कारण वाटर वेपर जो होगा इंक के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा. ओके, हम सभी को पता है इंक के अंदर क्या वाटर प्रेजेंट होता है. ओके, इंक प्लस वाटर. ओके, so the water which are present in the ink will be vaporized or evaporated. Thus, we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. So, this technique is known as evaporation technique. Now, volatile and non-volatile. Volatile means what? Which can intermix with each other and easily dissolve in the particular thing. Okay, surface will be not seen. Okay, surface दिखेगा नहीं, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा, उसे हम वोलेटाइल कहेंगे. या वोलेटाइल यानी ये भी कह सकते हैं कि जो आराम से लो टेम्परेचर में भी क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा. एंड नॉन वोलेटाइल विच कैन नॉट बी इवोपरेट इन अ लो टेम्परेचर. ओके, इन अ रूम टेम्परेचर इफ द सब्सटेंस इज evaporating,
then we say it as a substance as a volatile, and if the substance is not evaporating then it is non-volatile. ओके, सो वोलेटाइल का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और रूम टेम्परेचर में वो क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल आर इंटरमिक्सिंग विथ ईच अदर. ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो दिस टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अ इंक फ्रॉम अ वाटर. ओके, इंक के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन जो है उसको हम इवोपरेट करने के लिए इवोपरेशन मेथड यूज़ करेंगे, और ये जो होगी वो एक्टिविटी यूज़ करेंगे. प्रैक्टिकल इसका यूज़ किया जाएगा. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. इसमें क्या हुआ है, इंक के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन होगा. ओके, फॉर सेपरेट आउट दैट proportion of a water we are using evaporation method. For that we need a Bunsen burner. ये जो बर्नर है उसे हम बंसिंग बर्नर कहेंगे. ओके, बीकर ऑफ अ वाटर. ओके, बीकर कंटेनिंग वाटर. बीकर के अंदर वाटर है ऐसा चाहिएगा. वॉच ग्लास एंड इंक. ओके, नाउ वी आर हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग वाटर. On the surface of that there is a watch glass containing ink. तो जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन जो भी होगा वो आराम से इवोपरेट हो जाएगा, और इस टेक्निक को हम कहेंगे वेपोराइजेशन टेक्निक, इवोपरेशन टेक्निक भी कह सकते हैं. हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क. ओके, नाउ द सेकेंड इज हाउ वी कैन separate out cream from the milk. Nowadays we get a full cream, turned and double turned variety of a milk pack in a poly pack or a tetra pack in the market. Okay, in market there is a lot of milk, different type of milks. Okay, some contain a lot of fat and cream. Some of them have light cream containing milk. दिस वेराइटी ऑफ अ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट. ओके, और सभी का क्या होगा, फैट भी डिफरेंट होगा. ओके, अमूल गोल्ड आप रखिए ना, अमूल गोल्ड एंड अमूल ताज़ा. ओके, कॉमन एग्जाम्पल विच वी आर सीइंग इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, दैट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमूल ताज़ा एंड अमूल गोल्ड. ओके, इन अमूल ताज़ा देयर इज अ लेस फैट कंटेनिंग मिल्क और लेस क्रीम कंटेनिंग मिल्क, while in Amul Gold there is a lot of fat and cream containing milk. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filtered paper. Okay, क्या हो जाएगा, आराम से filtered paper से वो pass out हो जाएंगे. For such particles the filtration technique cannot be used for separation. Such mixture are separated by centrifugation. Okay, क्या पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से वो आराम से नीचे आ जाएंगे. सो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन नॉट सेपरेट आउट दैट कंपोनेंट स्मॉल पार्टिकल और अ स्मॉल पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस. ओके, फॉर सेपरेटिंग दैट सच पार्टिकल we are using centrifugation method. Which method? Centrifugation method. Okay, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. Okay, centrifugation method में क्या कहेंगे, हम जो उसकी टेस्ट ट्यूब होगी, ओके, उसके अंदर ये हम पूरा मिक्सचर लेंगे और कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में रोटेट करेगा. ओके, वो जो टेस्ट ट्यूब होगी उसको रोटेट करेगा, उसके कारण डेंसर पार्टिकल, ओके, डेंसर पार्टिकल जो होगा वो कहाँ पे, नीचे बॉटम में आ जाएगा, और राइटर पार्टिकल जो होगा वो कहाँ पे, ऊपर रह जाएगा. ओके, थ्रू दिस टेक्निक वी कैन सी द सेपरेशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द कंपोनेंट. कंपोनेंट से क्या, डेंसर पार्टिकल को नीचे आ जाएगा और राइटर पार्टिकल ऊपर रह जाएगा. ये पूरी टेक्निक हम देखेंगे. नाउ एप्लीकेशन. Used in the diagnostic laboratory for the blood and urine test. Okay, it is used in a diagnostic laboratory में इसका यूज़ किया जाता है. Okay, this technique is used, centrifugation technique, for the diagnostic laboratory. में इसका blood और urine test के दौरान उसको
उसके अंदर जो कितना प्रेजेंस है, ओके, कितने मिनरल प्रेजेंट है, ओके, और कितने इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में इसका टेस्ट किया जाता है. यूज इन द डेयरीज एंड होम टू सेपरेट अ बटर फ्रॉम द मिल्क, ओके, फ्रॉम द क्रीम. ओके, क्रीम में से हमें बटर को सेपरेट आउट करने के लिए डेयरीज में इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है. ओके, ઝેરું કહીએ ને આપણે, દહીં ઝેરે મમ્મી કરે, ઓકે, તો ધેટ ઇઝ નોન એઝ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન में કોન્સ્ટન્ટલી શું કરે, રોટેટ કરાવે છે. ઓકે, એ જે આખું છે, ઓકે, ક્રીમ જે છે, આખી ક્રીમ એમાંથી આપણે બટર મિલ્ક કાઢવું હોય, ઓકે, તો એના માટે શું કરવું પડે, ઝેરવું પડે. So that technique is known as centrifugation method. Okay, used in a washing machine to squeeze out water from the wet clothes. Okay, વેટ ક્લોઝેસમાં બી આપણે જોઈએ છે કે હું જે વોશિંગ મશીનમાં બી સ્ક્વીઝ કરવા માટે, વોશિંગ મશીનમાં બી જોઈએ છે કે આપણે હું વોટરને રિમૂવ કરવું હોય વેટ ક્લોઝેસમાંથી, તો આપણે શું કરીએ છીએ, ડ્રાય કરવા નાખીએ છીએ. ઓકે, સો ધેટ ટેકનિક ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન method. Okay, through which you can see that a wet clothes water particle will be removed by this technique. How can we separate a mixture of a two immiscible liquid? Now immiscible એટલે હું એકબીજા બે liquid છે. Okay, now we will discuss about the separation of a two liquid which are ઇમિસિબલ એટલે હું એકબીજા સાથે મિક્સઅપ થાય નહીં, એને આપણે ઇમિસિબલ કહીશું. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઓઇલ ઇન વોટર. ઓકે, दैट इज़ वन टाइप ऑफ इमिसिबल लिक्विड. જ્યારે वाटरની अंदर આપણે ऑयल नाखें, जब वाटर के अंदर हम ऑयल डालते हैं, ओके, तब क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होगा नहीं और एक लेयर बना देगा. ओके, एक लेयर बना देगा. इफ़ वी आर टेकिंग अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑयल, ओके, अगर दोनों का क्या होगा, अमाउंट सेम होगा, तो तब देख सकते हैं एक लेयर बन जाएगी दोनों के बीच में, बिकॉज ऑफ इमिसिबिलिटी ऑफ दैट टू लिक्विड. उन दोनों की इमिसिबिलिटी यानी क्या, एक दूसरे के साथ मिसिबल होंगे नहीं, मिसिबल यानी इंटरमिक्स होंगे नहीं. सो सेपरेट, तो उसको सेपरेट हम कैसे करेंगे, दो लिक्विड जो है उसको हमें सेपरेट करना है. ओके, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे. ओके, सेपरेशन टेक्निक. ओके, उसे हम कहते हैं सेपरेशन टेक्निक. फर्दर विद द हेल्प ऑफ फर्नल. ओके, हियर ये जो आपको एपरेटर दिख रहा है उसे हम फनेल कहते हैं. द सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. द राइटर slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. Okay, furnace में क्या molten iron को नीचे रखने के लिए और slag को ऊपर लेने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है. ओके, अब इस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टेक्निक. ओके, वी हैव टेकन फनेल, सेपरेटिंग फनेल. ओके, ये जो फनेल जो है उसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनेल. इन सेपरेटिंग फनेल we have taken water, okay, and we have also taken a kerosene or oil, okay, whatever we want to take. Okay, now what we are doing, we are shaking it and we have put on a cork on a top. now we are continuously shaking it and okay, 2 मिनट के लिए हमने उसको सेक किया एंड पुटिंग फॉर अ 2 or 3 minutes. ओके, वी हैव क्या किया, हमने 2 या 3 मिनट के लिए रखा, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम 2 लेयर विल बी फॉर्म. ओके, देख सकते हो कि एक जो होगी वो केरोसिन की होगी और एक जो होगी वो वाटर की होगी. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्टॉप कॉक, नीचे देख सकते हो. ओके, स्टॉप कॉक को खोल के हम वाटर को आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, पहले हम वाटर को सेपरेट करेंगे एक बीकर में और दूसरा बीकर लेके उसके अंदर हम केरोसिन या ऑयल ले लेंगे. ओके, वी विल टेक वन बीकर and separate a water. Same way on another beaker we will separate a kerosene or oil. Okay, through this technique we are separating a two immiscible liquid from each other. The principle is that immiscible liquid separate out in a layer depending on their density, और density के डिपेंड में क्या हो जाएगा, दोनों जो लिक्विड थे वो आराम से सेपरेट आउट हो गए.
हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड? ओके, अगर हमें सेपरेट करना है सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड को एक दूसरे, एमोनियम क्लोराइड यानी क्या, NH4Cl, NH4 यानी एमोनिया और क्लोराइड यानी Cl। ओके, हियर एमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन जो है उसको क्लोराइड कहेंगे जब एमोनियम के साथ रिएक्ट करेगा। सो एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके, और सॉल्ट जो है वो, ओके, there is a mixture of a salt and ammonium chloride. We have to separate out ammonium chloride from that salt. For separating that ammonium chloride, we will use sublimation technique. कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? sublimation technique. We have learned in chapter first that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating. Okay, we know it very well. When ammonium chloride is heated, it get directly converted to a gaseous form. Okay, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट किसको, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आता है। तो ये जो है उसे हम सब्लिमेशन कहते थे। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन यानी क्या, अगर कोई भी सब्सटेंस है, ओके, वो उसका स्टेट जो है वो सॉलिड है, अगर हम हीट कर रहे हैं और डायरेक्ट गैसियस में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो रहा है। क्यों सब्लिमेशन हो रहा है तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो टू सेपरेट अ सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल volatile component from a non-sublimal impurity, the sublimation process is used. Okay, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? sublimation process. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene. Okay, ये प्रोसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, वी नीड अ बर्नसिंग बर्नर। ओके, हमें क्या क्या चाहिएगा? बर्नसिंग बर्नर चाहिएगा, वॉच ग्लास चाहिएगा, या चाइना डिश भी कह सकते हैं। ओके, चाइना डिश ले लेंगे, ऊपर हम क्या करेंगे, फनेल को हम उल्टी में इसके क्या रिवर्स करके उसको इन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, उसको ढक देंगे। ओके, एंड इन अ चाइना डिश वी हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर जो था वो हमने चाइना डिश में ले लिया, एंड वी आर हीटिंग इट विद द बर्नसिंग बर्नर, और बर्नसिंग बर्नर से हम हीट कर रहे हैं। ओके, और एमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, क्या है कि वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में जो होगी, ओके, वो डायरेक्टली किस में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर गिविंग अ हीट, आफ्टर सम टाइम इट विल एमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली कन्वर्ट टू अ गैसियस फॉर्म। ऊपर देख सकते हो गैसियस फॉर्म में सॉलिडिफाइड एमोनियम क्लोराइड दिख रहा है। ओके, और जब उसका टेम्परेचर कम होगा तब वो कहाँ पे, वहाँ पे ऊपर देख सकते हो, तो एमोनियम क्लोराइड जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी और चाइना डिश में हमें मिलेगा सॉल्ट। सो वी हैव सेपरेटेड सॉल्ट फ्रॉम द एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड जो होगा वो ऊपर देख सकते हो, सॉलिडिफाइड एमोनियम क्लोराइड जो है वो वहाँ पे दिख रहा है। एमोनियम क्लोराइड वहाँ पे चला जाएगा और सॉल्ट जो होगी वो चाइना डिश में रह जाएगी। सो दिस टेक्निक इज नॉन एज सब्लिमेशन प्रोसेस, and we have already separated a salt and ammonium chloride with this technique. Now the another technique is dye in black ink a single color. The ink that, okay, chromatography technique, इस टेक्निक को हम कहते हैं chromatography technique. The ink that we use has a water as the solvent and the dye is soluble in it. इंक जो होती है उसके अंदर वाटर का सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, डाई जो होती है वो सॉल्यूट फॉर्म में होता है। ओके, तो डाई जो होगी वो उसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और हमें इंक मिलेगी। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलोंग विथ इट द डाई पार्टिकल। ओके, और इसको हम फिल्टर पेपर से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि इंक को हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं नहीं है। यूजुअली अ डाई इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, और हम सभी को पता है कि डाई जो होती है वो क्या मिक्सचर होती है,
दो या दो से ज़्यादा कलर की मिक्सचर होती है। द कलर कंपोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर। कलर कंपोनेंट जो होती है वो वाटर के अंदर आराम से घुल मिल जाता है, ओके, और आराम से वो सोल्यूबल है। वाटर के अंदर वो कलर कंपोनेंट आराम से सोल्यूबल होती है। ડાઈ તો પતા હે DYE ડાઈ યાની क्या આપણે હોરીમાં કલર જે રમીએ છીએ, ઓકે, એની માટે જોઈએ છે કે સોલિડ પાર્ટિકલ જે છે એના હાથમાં લઈએ છીએ, બરાબર, હોરીમાં કલર રમીએ ને એ, ઓકે, સોલિડ પાર્ટિકલ આપણે પાઉચ આવે ને, ઓકે, એને આપણે ડાઈ કીધું, તો જેવું પાણી નાખશું તે સોલ્યુબલ થઈ જશે અને કલર આપણે આવી જશે, ઓકે. રાઇઝિસ फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ओके. इस टेक्निक में क्या करेंगे, दिस टेक्निक ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी technique, okay. So this technique is known as chromatography technique. Chroma in Greek means color. Chroma means color. This technique was first used for the separation of a color, so this name was given, okay. This technique is used for separation of color. दो कलर को हम सब अभी बात की कि डाइज जो होती है, ओके, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कलर होते हैं. तो अगर इन डाई इफ देर इज अ टू कलर, सो वी हैव टू सेपरेट बोथ द कलर. सो फॉर that separation of that two color we need chromatography technique. कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, तो कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करके हमने डाई जो है उसके अंदर जो दो या दो से ज़्यादा कलर थे उसको हमने सेपरेट कर दिया. कौन सी टेक्निक से, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से. This technique was first used for separation of a color. So this is not, okay, just now we have discussed. Chromatography is the technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. Okay, ये कौन सी टेक्निक है, तो कि सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्यूट जो डिजोल्व हो जाते हैं, okay, उसको हमने सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करेंगे. एक ही सॉल्वेंट के अंदर, ओके, सॉल्वेंट दोनों का एक ही है बट सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट है. तो दो डिफरेंट सॉल्यूट जो है वो एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है. तो अगर हमें दोनों सॉल्यूट को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो इस टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, ओके. विद द एडवांसमेंट इन अ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड. You will study about chromatography in higher classes, okay. In detail we will discuss this technique, chromatography technique, in higher classes. Application to separate application of a chromatography. तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया है हमने, ओके. वी हैव टेकन वाटर, ओके, इसे मोबिल कहते हैं, मोबिल, ओके. इन मोबिल क्यों, क्योंकि मूवमेंट करेगा, वो क्या करेगा, ये जो स्पॉट है उसको लेके चलेगा ऊपर, तो इसे हम वाटर को मोबिल कहेंगे. स्पॉट ऑफ अ इंक, देख सकते हो इंक का स्पॉट किया. स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर्ड पेपर, ये जो है वो स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर्ड पेपर, यहाँ पे ए में देख सकते हो ये जो है वो जार है, ओके, जार कहेंगे, JAR, जार. पेपर क्लिप्स, देख सकते हैं पेपर का क्लिप जो है ताकि वो पेपर नीचे गिर ना जाए. ग्लास रॉड, कलर इन अ डाई, ओके, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई. डाई के अंदर जो कलर होंगे उसको सेपरेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, नेचुरल कलर में से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड के अंदर अगर ड्रग जो है, अगर ड्रग्स यानी क्या, मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, या तो ये नेगेटिव ड्रग्स भी कह सकते हैं, उसको हमें सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, क्रोमेटोग्राफी. सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ टू मिसिबल लिक्विड. अगर अभी हमने इमिसिबल के बारे में तो बात की है, नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन सेपरेट अ टू मिसिबल लिक्विड. मिसिबल यानी क्या, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो हम इसको हमें सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे,
तो के ये डिस्टिलेशन मेथड. ओके, कौन सी मेथड? डिस्टिलेशन मेथड. This method is called distillation. It is used for the separation of a component of a mixture containing two miscible liquid. मिसिबल यानी क्या? अगर दो लिक्विड जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, तो उसको दोनों लिक्विड को हमें सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक? डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे. that boil without decomposition and have sufficient डिफरेंस इन दैट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो तो सेम नहीं होगा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर से हम दोनों लिक्विड को सेपरेट कर देंगे. टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड. दो लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड का मिक्सचर जो होगा, ओके, दोनों में जो लिक्विड लिया है वो उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन दैट, वी विल सेपरेट आउट बोथ द लिक्विड which the difference in boiling point is less than 25 K. fractional distillation process is used. अगर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ओके, कोई एक का भी कह सकते हैं, ओके, एक का या दोनों का 25 K है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे. फॉर एग्जांपल, फॉर द सेपरेशन ऑफ अ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट fractions from the petroleum product, etc. The apparatus is similar to that for the simple distillation. Okay, simple distillation की तरह है, except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and condenser. देख सकते हैं fractionating ये जो है वो बीच वाले, उसके बारे में बात करें, कॉलम. ओके, the apparatus is similar to that for the simple distillation except that fractional, अभी बात की, क्योंकि फ्रैक्शनल कॉलम जो होगी वो वहाँ पे की गई. A simple fractionating column is a tube packed with a glass bead. ग्लास बीड से देख सकते हैं, ग्लास बीड से वो ट्यूब पैक की गई है. The bead provides surface for the vapor to cool and condense rapidly as soon as. ओके, बीड जो है उसका यूज़ क्या है? तो कि ये जो यहाँ से जब इवोपरेशन होगी, कोई भी लिक्विड जो होगा वो गैसेस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे बीड में क्या करेगा? उसको थोड़ी कूलिंग मिलेगी, और कूलिंग के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्या सॉलिड, ये जो है कंडेंस हो जाएगा. ओके, कंडेंस होने में उसको हेल्प करेगा. So here we will get a pure liquid component. Pure liquid component हमें मिल जाएगा. Okay. Now we will see one video. Separating funnel. To do this experiment, we require a separating funnel, stand with a clamp, mixture of oil and water, filter funnel, and beakers. Take a filter funnel and place it on the mouth of the separating funnel, which is clamped to a stand. Pour the mixture of oil and water into the separating funnel through the filter funnel. Oil and water will appear as separate layers. Remove the filter funnel from the separating funnel and close the separating funnel using a lid. Take the separating funnel from the stand. Invert the funnel and shake it gently and slowly open the stopcock of the funnel to release the pressure inside the funnel. Place the separating funnel in the stand and allow the two liquids to separate completely.
Oil forms the top layer and water forms the bottom layer. Take a beaker and place it below the separating funnel. Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully onto the beaker. Close the stopcock as the oil reaches the stopcock. Take another beaker and place it below the separating funnel. Open the stopcock and now collect oil from the separating funnel. The immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. The denser liquid will fall to the bottom, forming the lower layer, and the lighter liquid forms the top layer. Water is denser than oil. Simple distillation. We require a mixture of acetone and distilled water, stand with clamp, heating mantle, and porcelain chips. Take a mixture of acetone and distilled water and pour it into a 250 ml RB flask or distillation flask. Clamp the RB flask to a stand and place it in a heating mantle. Take some porcelain chips using a spatula and put it in the RB flask to avoid bumping while boiling. Connect a distilling head to the RB flask and a thermometer adapter to the distilling head. Insert a thermometer through the thermometer adapter. Connect a water condenser to the outlet of the distilling head. Connect a vacuum adapter to the water condenser. Connect a 100 ml RB flask or receiver flask to the vacuum adapter. Take an ice bath and place the RB flask in the ice bath. Connect a rubber tube between the tap and the inlet of the condenser to allow the cold water to enter. Connect another rubber tube to the outlet of the condenser to pour the hot water from the condenser to the sink. Open the tap so that water flows through the tube and fills the condenser and then comes out through the outlet. Set the temperature of the heating mantle to 56 degrees and heat the mixture to boil. At 56 degrees, acetone vaporizes and the vapors pass through the condenser and condensation occurs. The acetone is collected in the receiver flask in a liquid form. Water is left behind in the distillation flask. Simple distillation is used for the separation of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. Acetone boils at 56 degrees and water boils at 100 degrees. Fractional distillation. We require a mixture of methanol and ethanol, stand with a clamp, heating mantle, and porcelain chips. Take a mixture of methanol and ethanol and pour it into a 250 ml RB flask or distillation flask. Clamp the RB flask to a stand and place it in a heating mantle. Take some porcelain chips using a spatula and put it into the RB flask to avoid bumping while boiling. Connect a fractionating column to the RB flask. Connect a distilling head to the fractionating column and a thermometer adapter to the distilling head. Insert a thermometer through the thermometer adapter. Connect a water condenser to the outlet of the distilling head. Connect a vacuum adapter to the water condenser. Connect a 100 ml RB flask or receiver flask to the vacuum adapter. Take an ice bath and place the RB flask in the ice bath.
Connect a rubber tube between the tap and the inlet of the condenser to allow cold water to enter. Connect another rubber tube to the outlet of the condenser to pour the hot water from the condenser to the sink. Open the tap so water flows through the tube and fills the condenser and then comes out through the outlet. Set the temperature of the heating mantle to 65 degrees and heat the mixture to boil. At 65 degrees, methanol vaporizes and the vapors first rise through the fractionating column and pass through the condenser. Condensation occurs and methanol is collected in the receiver flask in the liquid form. Remove the RB flask containing methanol and connect a new RB flask to the vacuum adapter. Again, set the temperature of the heating mantle to 78 degrees and heat the contents of the RB flask. At 78 degrees, ethanol vaporizes and the vapors rise through the fractionating column and pass through the condenser, and condensation takes place and ethanol gets collected in the receiver flask in a liquid form. Fractional distillation is used for the separation of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 K. Centrifugation. We require milk, distilled water, centrifuge tubes, centrifuge machine. Take a centrifuge and fill 3/4 of it with milk. Place the centrifuge tube in one of the holes of the rotor of the centrifuge tube. Take another centrifuge tube and fill 3/4 of it with distilled water. Place it opposite to the first centrifuge tube to balance the centrifuge machine. Then, close the centrifuge machine and centrifuge the milk for 2 minutes and stop the machine. Take the centrifuge tube containing milk from the machine and observe the changes. The fat rises to the top, resulting in a cream layer at the top, and skim milk, that is plasma phase of milk, at the bottom. The denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. Chromatography. We require a mixture of red and blue inks, distilled water, isopropyl alcohol, Whatman filter paper strip, that is 20 by 2 centimeters, capillary tube. Take a Whatman filter paper strip 20 by 2 centimeters. Draw a line with a pencil above 4 centimeters from one end. Draw another line lengthwise from the center of the paper and name the point at which two lines intersect as P. Take a capillary tube. Dip it into the beaker containing a mixture of red and blue ink and take the mixture using the capillary tube. Put a drop of the mixture of red and blue inks at the point P. Allow it to dry in open air. Again, take mixture of red and blue ink using the capillary tube. Put another drop on the same spot and dry it again so that spot is rich in mixture. Take 5 ml of distilled water in a measuring cylinder and pour it into a chromatographic chamber. Then take 5 ml of isopropyl alcohol in a measuring cylinder. Pour it into the chromatographic chamber containing distilled water. Mix the contents of the chromatographic chamber using a glass rod. This mixture is used as the solvent. Take the filter paper and suspend the filter paper vertically in the chromatographic chamber
containing solvents in such a way that the pencil line remains about 2 centimeters above the solvent level. Close the chamber and keep it undisturbed for some time. Notice the rise in solvent along with the mixture of red and blue ink. When the solvent has risen about 15 centimeters, you will notice 2 different spots of blue and red colors on the filter paper. Take the filter paper out of the chamber and mark the distance that the solvent has raised on the paper with a pencil. This is called the solvent front. Dry the paper and put pencil marks in the center of the blue and red spots. Measure the distance of the solvent front from the original line and the distance of the 2 spots from the original line. Calculate the RF values of the blue and red inks by using the formula.